A very welcome to Agromet Classroom. So from today we are starting remote sensing lecture series और ये हमारे lecture series का सबसे पहली वाली वीडियो है। ये आपको कहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये या फिर ये बोलना सही रहेगा कि where will it benefit you more? So this lecture series will definitely go along with your curriculum as well as it will also go along with the syllabus of ASRB NET 2025 and for the exam of ARS 2025 ICAR SRF और PhD 2025 के लिए भी बिल्कुल बेनिफिशियल है। रिमोट सेंसिंग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। And meanwhile, when I was on break, I was getting quite few requests regarding remote sensing, and I get to know that Unit 8 is the most hated chapter of the syllabus. So, without any further ado, let's begin our video today. Okay? तो सबसे पहली बात ये होती है कि रिमोट सेंसिंग है क्या। व्हेन वी थिंक अबाउट रिमोट सेंसिंग तो एक बात ये है कि इट इज मेड ऑफ टू टर्म्स नेमली रिमोट एंड सेंसिंग। योर रिमोट this will be means afar or from distance, okay, and when we talk about sensing it means to sense and to sense means what, like in our body we have five sensory organs, right? What they do, they sense. If we see if we are saying that we are sensing something or our sensory organs are sensing like if we talk about our eyes are sensing, okay, what does it do? हमारे आंख का क्या काम है? आंखों का काम ये है देखना। जो वो देखेंगे उसको देखने का मतलब क्या होगा, ये उनका सेंस है, ठीक है। अब वो जो देख रहे हैं उसको देखने से क्या मिल रहा है हमें? इंफॉर्मेशन, वी आर गैदरिंग information. Another sensory organ of our body, that is ears, what are they sensing? They are sensing sound, and eventually what does this sound work for us? This sound works as an information for us. So when we talk about remote sensing in whole, it means to sense something or to gather the information from distance, from sitting far from the target place, okay. Now the question is, why remote sensing? Why we are studying remote sensing as an agriculture graduate or as an agrometeorology graduate? Why we have to study remote sensing? Or anybody? Why does it? Why the one has to study remote sensing, right? So let's take an example. Okay, let's take an example of a farmer. We are all agriculture students, so let's take farm as an example. Okay, because our all study, the general idea is all based on the farm and farmers, ठीक है। अगर आप एक किसान हैं और आपको ये चेक करना है कि आपके जो खेत है, आपने एक खेत लगाए काफी बहुत बहुत बड़े एरिया में, कई एकड़ के आपके खेत है, ठीक है। अब आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। आपको ये देखना है कि whether the water stress is there among the crop, then diseased plants are there or not. If disease is occurring, तो वो कौन से एरिया तक किस एरिया ऑफ द प्लॉट तक वो रिस्ट्रिक्टेड है, इफ इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड तो ये कितनी दूरी तक फैल रहा है, क्या इसमें रीजन हो सकता है इस डिजीज का, पेस्ट के बारे में, ठीक है। और हार्वेस्टिंग टाइम, ये सब कुछ डिड्यूस करने के लिए ये सारी चीजें हमें पता लगानी है, ओके। व्हाट कुड बी द पॉसिबल aspect of it, like what could be the possible outcome, how you are going to get the information. एक तो information ये एक तो तरीका ये है कि ये जो फार्मर है ये डायरेक्टली इस एरिया तक जाए, खुद ब खुद फिजिकली उस एरिया तक जाए टू डू द राउंड अप्स। ये राउंड अप करे, ये चेक करे फिजिकली कि कहाँ पे
वाटर स्ट्रेस एरिया है, किस जगह पर डिजीज है, कहाँ पे कौन सा पेस्ट इन्फेस्ट कर रहा है, कहाँ हार्वेस्टिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, हार्वेस्टिंग होगी तो हमारी यील्ड कितनी आएगी, ये सब कुछ वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि फर्स्ट यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट है। ओके, एंड दिस स्क्रूटनी, क्योंकि वो तो स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, राइट? तो इफ दिस स्क्रूटनी हैज टू बी डन, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द स्क्रूटनी in one go or in one day if the area of the plot is too much. You cannot go and scrutinize every each of the plants of the crop that you cultivated, right? And another thing is um, timing, right? कई बार टाइमिंग ऐसी होती है कि जो इन्फेस्टेशन होता है इसकी टाइमिंग काफी जरूरी होती है हमें। ठीक है, लेट्स से इन्फेस्टेशन अभी हो रहा है एंड यू कैन नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट टू रेगुलेट द इन्फेस्टेशन। उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास या तो दवाइयाँ नहीं होंगी कभी, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि आप फिजिकली प्रेजेंट ना हो, आप किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। और अगर पेस्ट की बात की जाए तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमेशा इंसेक्ट इज नॉट योर पेस्ट। ओके, ओनली इंसेक्ट कैन नॉट बी कॉल्ड एज द पेस्ट। समटाइम इट कुड बी बर्ड्स, sometimes it could be some animals, let's say cow or monkey, they are coming to cause harm to your crop, ये सब चीजें। और आपका घर आपके फील्ड से दूर है, what will you do? आप हमेशा वहां पर बैठ तो नहीं सकते, you cannot physically present there, and the time that we have here, अभी जो हमारे पास टाइम है, इस टाइम में ये जरूरी भी नहीं है कि आप हमेशा अपना टाइम डिवोट करें अपने फील्ड पर। यू हैव टू बी क्विक, यू हैव टू बी very well informed about your produce, about the crop that you're cultivating, the market and everything, the yield, or then weather forecasting, everything. And for that reason, you cannot rely on oneself. आप खुद के ऊपर या किसी दूसरे इंसान के ऊपर ये चीज भरोसा नहीं कर सकते कि यू हैव टू बी देयर, फिजिकली प्रेजेंट रहे। हालांकि इन जनरल टर्म्स व्हाट इज हैपनिंग कि हमारे देश का जो किसान है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने खेत पे रहता है, और वो खेत पर ही देखना देखना सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी काफी कुछ नुकसान होता है उसको। ठीक है, इसी चीज को कम करने के लिए भारत सरकार जो है वो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग पर एग्रोमेट्रोलॉजी जो एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दे रही है कि हाँ, ये आप इस सर्विसेज को यूटिलाइज कीजिए, फार्मर्स को ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं ताकि अ, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको, और इवेंचुअली हमारी जो हमारे देश का जो है प्रोड्यूस, उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ठीक है। So what is remote sensing? The definition is here. If you talk about remote sensing and its definition, so remote sensing is the science of acquiring information about Earth's surface without actually being in contact with it. This is done by sensing and recording reflected or emitted energy, okay, and processing, analyzing and applying that information. ठीक है, वही बातें जो मैंने कही है आपको कि हम विदाउट actually being in contact with it, we are acquiring the information about Earth's surface. ठीक है, और ये क्या होता है कि जो एनर्जी, ये सब कुछ एनर्जी का लेखा जोखा है, we can say that the energy is coming here to the Earth's surface and it is reflecting back. This reflected energy, it is being studied or analyzed, ठीक है, and eventually this, from this thing, from this reflected and this analysis, we are going to obtain our information. ठीक है, okay, let's see the component of remote sensing. The component of remote sensing, the the first component of the remote sensing is energy source or illumination. Energy source or illumination means what? That we need some kind of energy which will illuminate the target, and then the from the target it will be reflected back to the sensor or the satellite, and from there that reflected energy will be analyzed and we are going to
obtain the information. Okay, this is the flow chart of the same thing. That see, energy source or illumination is there, radiation in atmosphere, okay, interaction with the target, then it will go to the sensors, recording of energy by the sensor, it is transmitted, recepted and processed, okay, in the sensor or by the sensor, and then this interpretation and analysis is done. This analysis is used for the application, as hence your information is gathered. All right, okay, let's go on. So after this basic idea, we'll directly jump on platforms. Okay, so what is platforms? The base on which the remote sensors are placed, that's it. Like in this component part we see sensors, okay. It is the basic idea that all the reflected energy, they are sensed or they are acquired by the sensors, and these sensors needs to be placed somewhere. So where these sensors are placed is called platform. This will be called as platform. That's it. Okay, nothing more. And these platform, they can be stationary, okay, they can be placed at one space, एक ही जगह पर ये खड़े रह सकते हैं, ठीक है, और मोबाइल, या फिर ये घूम सकते हैं, ठीक है, एक जगह पे नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल स्टेशनरी प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल यहाँ दिया है, ट्राइपॉड या फिर स्टेशनरी बलून्स, मोबाइल, अगर मोबाइल प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट की बात की गई है। The type of platform depend upon the needs as well as the constraints of the observation missions. So based on this, there are three main types of platform. First is ground based, second is airborne, and then third is our spaceborne platform. Okay, if we see ground borne platform, these platforms are used on the surface of Earth. Okay, example could be your cherry arm configuration and tripods. Okay, then airborne platform. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो उनकी फील्ड ट्रेजेक्ट्री होती है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके, एंड दे कैन आल्सो रीच अप टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑलराइट। इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस। व्हाई? क्योंकि मान लीजिए बिल्कुल हवा काफी तेज चल गई, तो ये जो बलून है ये तो बिल्कुल उड़ गया, ओके। बारिश आ गई, आंधी आ गई, तो कभी ये बलून फूट सकते हैं या फिर कहीं और लॉस्ट हो सकते हैं, द सेंसर कुड बी लॉस्ट एज वेल, काफी कुछ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज tethered balloons. Tethered balloons, they are connected to Earth's stationary, it's Earth's, okay, Earth's surface, ठीक है। They are connected to Earth's surface and it is stationary while held by वायर्स, ठीक है, वायर से कनेक्टेड होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जिस वायर में, और फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर वी हैव द होल्ड ऑन दिस टीथर्ड बलून। नेक्स्ट इज पावर्ड बलून। पावर्ड बलून में क्या होता है कि एक डेजिग्नेटेड जियोग्राफिकल लोकेशन में पावर्ड बलून को भेजा जाता है, और वहां तक पहुंचने के लिए जो रिक्वायर्ड, जो डिजायर्ड लोकेशन है या फिर जो लेंथ, सॉरी, जो हाइट कवर करनी है, इफ यू वांट दैट, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि प्रोपल्शन दिया जाता है, ओके। प्रोपल्शन विल वर्क एज सम मोमेंटम फॉर दैट बलून टू go up to or reach up to that height or that geographical location, ठीक है। तो ये हो गई बात बलून्स की। बलून्स में तीन टाइप्स होते हैं, ओके, फ्री बलून्स, टीथर्ड बलून्स एंड पावर्ड बलून्स, ठीक है। और ये इनका बेसिक आइडिया है, इनको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के बारे में क्या बताओ। एयरक्राफ्ट है,
वो क्राफ्ट क्या करेगा कि जो सेंसर है उसको कैरी करके इट विल फ्लो, राइट? नाउ देयर आर एग्जांपल्स, these examples are very important. Please note down. The first one will be your Dakota, next Avro, next Cessna, and then Canberra, right? ये सब क्या है? They are used in India, and which are not used in India are U2 and Rockel X15. ठीक है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल्स, बिल्कुल देख लीजिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म्स में। स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म की जब बात करें तो इनका फीचर क्या है? दे आर नॉट अफेक्टेड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर, okay? They move freely in their own orbit around the earth. Now according to the orbital mode or the satellites, there are two types. First is geostationary platform, right, or satellite, and then next is sun synchronous or polar orbiting satellites. Okay, next on board we have sensors. So when we talk about sensors, they are the instruments which detect various objects on Earth's surface by measuring the electromagnetic energy reflected or emitted from them. What are the information that we get? We get information like color information or the temperature information, as well as it can also detect the roughness, the slope, and electrical conductivity of the objects under study. And sensors are mounted on the platforms. All right. So what, or roughly we can say that we can get few informations like color information, temperature of the surface. They can detect the roughness of the surface or of the target, the slope or topography, as well as electrical conductivity of the subject under study. ठीक है, जो sensors हैं they are mounted on the platforms, right? अच्छा, there are few requirements when we are going to choose the sensor for our satellite. Okay, they are including they include robustness, maintenance free, and it should be of low energy consumption. अगर रोबस्टनेस की बात की जाए तो वो जो हमारा सेंसर है वो काफी मजबूत होना चाहिए। रोबस्टनेस मतलब इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, ओके, इट शुड बी स्ट्रॉन्गर, शुड बी स्टर्डी इनफ। और क्योंकि जब वो स्पेस में जाएगा, हमारा जो भी सेंसर है वो अगर अल्टीट्यूड के साथ ऊपर एलिवेट होता है, द असलरेशन वुड बी फेल्ट बाय द सिस्टम, ठीक है? तो वो जो ह्यूज असलरेशन हो रहा है उसको उसको हैंडल कर सके, ठीक है? व्हेन द सेंसर्स आर गोइंग अपवर्ड, ठीक है, एज एज सून एज देयर जैसे जैसे वो as our sensor is going along with the system, it is going up in the space or in the atmosphere, the temperature is gradually decreasing. So it should be robust enough to handle the low temperature and should work also in the colder region or cold temperature. The system should not be jammed. Okay, the cosmic radiation particles और sun winds, ये सब जो है ये आपको जब स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म पे जो सेंसर्स होंगे उनके लिए ये वाला पॉइंट यूज अप हो जाएगा कि कॉस्मिक रेडिएशन पार्टिकल्स या फिर सन विंड को भी हैंडल कर सके, उसमें भी हमारे जो सेंसर है वो वर्क कर पाए। मेंटेनेंस फ्री होना चाहिए, ठीक है? वाई? बिकॉज इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू मेंटेन इन द ऑर्बिट, ठीक है? एग्जाम्पल हबल स्पेस टेलीस्कोप दे दिया गया। ओके, लो एनर्जी कंजम्पशन होना चाहिए, ऑन बोर्ड बैटरी शुड बी प्लग्ड और सोलर पैनल शुड बी देयर ताकि जो उसकी खुद की एनर्जी वो यूटिलाइज कर सके, ठीक है? ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है और ये टिपिकल है। ओके, you can use it while you are answering the descriptive answers in the ARS. Okay, बाकी आपको पता चाहिए these 3 points are it will add some grades. Okay, आगे बढ़ा जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स देखते हैं। कुछ कुछ कई बेसिस होते हैं हमारे पास सेंसर्स को क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहला जो है वो जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड।
source of energy used. ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड के बेसिस पे हमारे पास अगर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की जाए तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं of sensors. First is our active sensor and another one is passive sensors. Okay, active sensor की बात की जाए तो they use their own source of energy. This energy is reflected back from earth and received by the sensors. ठीक है, ये हो गया हमारा सेंसर। तो ये क्या करेगा, यही अर्थ सरफेस पे एनर्जी ट्रांसमिट करेगा और फिर यहीं से जो जो एनर्जी है वो रेडिएट बैक हो जाएगी। ठीक है, this will be called as these type of sensors which emit their own source of energy towards the earth or towards the target area or target region. They are called active sensors और एग्जाम्पल में रेडार, लिडार, सोनार ये सब है। ओके, और आगे बढ़ा जाए पैसिव सेंसर्स, तो पैसिव सेंसर्स में they don't have their own source of energy. ठीक है, the energy emitted from earth's surface is received by the sensors. The sunlight is the ultimate source of energy for sensor. It is weather dependent. ये बात थोड़ी सी जरूरी है ध्यान रखने वाली। यहाँ नीचे एक फिगर देख लेते हैं, सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा बेटर तरीके से। ये एक जो डायग्राम है ये है एक्टिव सेंसर के लिए। ये देखिए, ये सेंसर है हमारा, इसने एनर्जी यहाँ पर रेडिएट की अर्थ के तरफ या फिर टारगेट रीजन की तरफ, और ये रिफ्लेक्ट बैक होके सेंसर को रिसीव किया गया। ठीक है, दूसरा जो पैसिव और पैसिव सिस्टम में दो टाइप्स हो जाते हैं। पहला ये कि जो सोलर एनर्जी है वो रेडिएट होगी या वो यहाँ पर अर्थ तक जाएगी और फिर ये अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होके सेंसर तक पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पे भी सेंसर ने अपने खुद की एनर्जी सोर्स को यूज नहीं किया। सेकेंड ये हो गया कि जो थर्मल और जो माइक्रोवेव रेडिएशन होते हैं अर्थ से, वो भी डायरेक्ट रेडिएट बैक होते हैं और ये रिसीव किया जाता है पैसिव सिस्टम के द्वारा। यहाँ पर भी सेंसर ने अपनी खुद की एनर्जी सोर्स को यूटिलाइज नहीं किया, बट रादर इट इज रिसीविंग द रेडिएटेड एनर्जी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, तो इस तरीके से ये दो हमारे सेंसर टाइप हो गए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड। अच्छा, पैसिव सेंसर्स के बारे में कहा गया कि इट इज वेदर डिपेंडेंट। व्हाई इट इज वेदर डिपेंडेंट? क्योंकि इस वाले डायग्राम में देखा जाए, अगर ये सोलर एनर्जी को यूज कर रहा है तो मान लीजिए काफी क्लाउडी वेदर हो गया, बहुत सारे क्लाउड आ गए, तो ये सूरज तो छुप जाएगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एनर्जी एक्चुअली इसको रिसीव होनी चाहिए थी इस अर्थ को, और जितनी एनर्जी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके सेंसर को मिलनी चाहिए थी, दिस विल बी हाईली रिड्यूस्ड। ये काफी छोटी और छुप हो जाएगी, सॉरी ये काफी कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो एनालिसिस ऑफ डेटा है उसको उसको अच्छी तरीके से हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। जो डेटा होगा उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, यही बात यहाँ पे भी है। सेम प्रोसेस, अगर यहाँ पे अर्थ को अच्छी तरीके से एनर्जी नहीं मिली जितनी उसको मिलनी चाहिए, वो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि क्लियर डेटा या जो डेटा की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको वेदर डिपेंडेंट बोला गया। आगे बढ़ा जाए, सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है उसमें है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ सेंसर्स, ये सेंसर्स किस तरीके से फंक्शन कर रहा है उसके बेसिस पे हमारे दो टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट हो गया फ्रेमिंग सिस्टम, नेक्स्ट हो गया स्कैनिंग सिस्टम। जो फ्रेमिंग सिस्टम है वो क्या करता है कि
2D images are formed at one single instant. ये 2D images ही बनाएगा, okay, एक instant में. A lens is used to gather the light which is passed through various filters and then focused on a flat photosensitive target. ये इतना डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि 2D इमेज बनाएगा, ठीक है. जिस तरीके से हमारे कैमरा, ऑर्डिनरी कैमरा जिस तरीके से काम करता है कि वो पिक्चर क्लिक करके फोटो सेंसिटिव शीट्स हो गई या जो टारगेट हो गया जहाँ पे उसको फ्लैट फ्लैट सरफेस हो गया उस पे, जिस तरीके से हमारी फोटो डेवलप होती है फोटोग्राफ्स, उसी तरीके से ये फ्रेमिंग सिस्टम काम करते हैं. ऑर्डिनरी कैमरा यूज होता है, ठीक है, सेंसर्स के तौर पे, या फिर वीडियोकॉन कैमरा यूज होता है. ओके, फ्रेमिंग सिस्टम के बारे में बस इतना जान लीजिए. याद रखने वाली क्या चीज़ है? याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि 2D इमेज बनेगा, ओके, सिंगल इंस्टेंट में ही जो आपका डेटा है वो तैयार हो जाएगा. फ्लैट फोटो सेंसिटिव टारगेट पे हमारा 2D इमेज जनरेट होगा. एग्जाम्पल इसकी बहुत जरूरी, ऑर्डिनरी कैमरा एंड द वीडियोकॉन कैमरा. ओके, next if we go on, the scanning system is there. In the scanning system, what is happening that there is a single detector, and there are sometimes there are a number of detectors with specified field of view, right? And this is issued with sweeps across across a scene in a series of parallel lines and collect data for continuously produce an image. What is it saying? Okay, we will look after it कि ये कह रहा है. पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. The example for scanning is your multispectral scanner, microwave radiometer, microwave radar, and optical sensors. Okay. There's another point that in framing system, all the pixel of an image is measured at the same time, right? Single instant. ठीक है. Right. But when it comes to scanning system, all of the pixels are of an image are measured sequentially. Like this is one pixel, this is another, this is another, this is another, and this is your let's say this is an image. Okay, these green one, 2, 3, 4, 5, 6. This is 6 pixels, right? Then just above it, here another 6 pixels. Then below this, there will be 6 pixels. What is happening? That in the framing system, okay, in the framing system, the at the same time, like in an instant, all of these pixels are clicked or it is sensed and it is given as a data on a photosensitive sheet or photosensitive target. Okay, but in the scanning system, what is happening that the sensor, it is sensing first this pixel, then this pixel, then this pixel. Okay, let me change the pen. First is this pixel, then it is jumping this pixel, then it's reading this, then this pixel, then this, and then sequentially it is going to this, and then this is it. Like one by one, all the pixels are being studied or scanned. Okay, this will be your scanning system. If we let's just go to the diagrams. If we are going to see the diagram, it will be more clear to us, right? This is the example of this is the figure for framing system. This is your sensor. Okay, see the examples: camera, ordinary camera, or the Vidicon system. Lens is here. Okay, what it is doing, there are two surfaces. If you see, right, the two surfaces, one is this, the dotted one, another is this, the bold one. What is happening?
it is clicking the picture. From where it is clicking the picture? When it is overlapping. Okay, when it is overlapping, then it is clicking the picture. Okay, and it is not like it is clicking just one pixel and then another pixel. No, it is not going like that. It is just like this is one image. Okay, image number one, then it is image number two, then there is image number three. Framing system, it is doing what? The sensor, it is clicking this whole image at once, then shifting, and it is covering this whole image at once, then again shifting, then again it is clicking or capturing this whole image at once, and then moving forward. This is what happening in framing system. फ्रेम बाय फ्रेम काम हो रहा है. ये एक फ्रेम होगा, ये दो फ्रेम, ये तीन फ्रेम. तो पहले यहाँ पे काम किया, फिर यहाँ, फिर यहाँ. So frame by frame it is capturing the data. But when we see in the scanning system, okay, this is your scanning system. ठीक है? What is happening? See, instantaneous field of view. This is our sensor. Okay, this is sensor. This is instantaneous field of view, IFOV. Okay, यहाँ से energy source is being released. ठीक है? We should not focus this. इतना ये पूरा ऐसे नहीं देखना है, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है. ये जो ऐसे करके पिरामिड बन रहा है, ये वाले एरिया को जो कवर कर रहे हैं, हमें वो देखना है. ठीक है? अब हो क्या रहा है? This is the whole image. The scan detection, ये this is the area. This is the whole of the area. ठीक है? What it is going to do, it is this whole area. Let's suppose this is one image, one full image. What is going to do? It is going to divide this whole image in small pixels. Okay, this is the whole image. I'm just converting it to this. Okay, this is the whole image. What it is doing, it is going to um, convert this whole image or this whole piece of land. Okay, this whole piece of land into small pixels, and these small pixels will be what? It will be of the size of angle of IFOV, instantaneous field of view. एक कोई भी स्कैनर है, ठीक है, एक कोई भी स्कैनर है, you are just going to watch through that scanner. उतना ही आप उतनी ही एरिया देखेंगे ना जितना आप देख सकते हैं. जो आपके फील्ड ऑफ व्यू में है, आप सिर्फ उतने ही एरिया देखेंगे ना. तो वही बात है यहाँ पे भी. तो जो स्मॉल पिक्सल है, ये स्कैनिंग सिस्टम क्या कर रहा है कि वो जो फील्ड ऑफ व्यू है अपने, वो सेंसर जो है वो खुद का जो फील्ड ऑफ व्यू है उसको एक पिक्सल बना दे रहा है. एंड देन दैट पिक्सल इट इज अब वो जो एक पिक्सल बना दे रहा है, उसके बाद what it is doing, that is dividing this whole piece of land into small pixels according to its field of view. एक अगर यहाँ पे अभी सेंसर है तो उसका पहला फील्ड ऑफ व्यू इतना ही बड़ा होगा, तो ये क्या हो गया? दिस विल बी इट्स फर्स्ट पिक्सल. once it going to scan it will shift to second one. ठीक है, ये हो गया second pixel, then third pixel. meanwhile it is going to scan like this. once it's done here, फिर यहाँ नीचे आएगा and then it's going to go like this. okay, ठीक है. This is what is happening in scanning. But what is what is your framing system is doing? Framing system is going to capture this whole land irrespective of the pixel or the more credible image. It is just going to click the image.
ठीक है, ये जो पीस ऑफ लैंड है इसकी बस ये लैंड की पिक्चर ले लेगा, वही करना है फ्रेमिंग सिस्टम को। लेकिन ये जो स्कैनिंग है, स्कैनिंग सिस्टम क्या कर रहा है, वो एक एक पिक्सल में डिवाइड कर रहा है, उसके बाद वो क्लिक कर रहा है। वाई? क्योंकि जो डेटा है वो ज्यादा डिस्क्रीटली, ज्यादा अच्छी तरीके से हमें स्कैनिंग सिस्टम में दिख जाए, राइट? ओके, होपफुली ये आ गया होगा समझ में। इफ इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, इसके बारे में थोड़ा देख लिया जाएगा। मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर से इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? बस अभी हमें क्या ज़रूरत है हम उसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज वी हैव द एग्जाम, नो? एग्जाम के तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि जो टाइप्स हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेंसर्स के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज फ्रेमिंग सिस्टम, अनदर इज स्कैनिंग सिस्टम। ओके, the examples are very important for the framing system. First is ordinary camera, second is videocon camera. And when it comes to scanning system, the multispectral scanner, microwave radiometer, microwave radar, and optical sensors. These are the examples of scanning system, and the examples are more important. Okay, let's move forward. If you move forward, there is a third type, and if you move forward, there's a third type. The third one is on the basis of technical components being used of the system. Okay, there are three types: multispectral imaging sensor system, second is thermal remote sensing system, and third one is microwave radar sensing system. Briefly, इसको देखा जाए अगर, तो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम जो है, they may use the conventional camera. It uses both the photographic and the scanning systems. Your photographic system means your framing system. Okay, the examples are more important. It is RBV okay, it is RBV sensor. The example is more important. It's RBV sensor of the Landsat. Okay, if we move forward, the thermal remote sensing system is there. They use radiometers is the examples. Okay, the radiometers, they use photometers, they use a spectrometer, thermometers to detect the temperature change. The thermal remote sensing system, it will give the temperature change or temperature variation. Okay, when we are talking about microwave remote sensing system, they use antenna arrays for collecting and detecting the energy from terrain elements. All right, okay, let's move forward. The sensor classification is again given over here. If we talk about if we talk about passive sensors, there are two types: scanning and non-scanning. Okay, imaging and non-imaging. Okay, what are important? The examples are important. It may be these examples called TV camera, solid scanner, and then these are more important of the scanning type. Okay, and if we go on active sensors, maybe scanning वाले के जो examples हैं, these are more important. ठीक है, okay, it's better if you pause the video and look at it, or you can go to our Telegram channel. We have shared this image there already. Okay, all right, we are back to our electromagnetic spectrum. What is electromagnetic spectrum? Is the first requirement for remote sensing is to have the energy source to illuminate the target. Okay,
this energy is in the form of electromagnetic radiation. Whatever we have, if you see from before, from the beginning of this video, we are talking about energy being reflected back, energy being received, energy being transmitted. What is this energy? The energy, it is made up of electromagnetic radiation. This energy is electromagnetic radiation, and it consists of electric field, okay, which varies in magnitude in and direction perpendicular to a magnetic field. Electromagnetic spectrum, um, it has what? Electric radiation plus magnetic radiation. Okay. There's another point. Two characteristic of the electromagnetic. Okay. There's another thing that they are the electric field and the magnetic field. They are both at the right angles, or the one more point, that field oriented at right angles to the electrical field. That means the electrical field and the magnetic field both are perpendicular to each other. Okay. Two characteristics of electromagnetic radiation are particularly important to understand remote sensing. They are wavelength and frequency. Cool. Electromagnetic radiation as an electromagnetic wave that travels through the space at the speed of light. Electromagnetic radiation, they have a speed of light, that is 3 into 10 to the power meter per second. Okay. All right. So if we talk about electromagnetic radiation, it shows the wave type. This is wave type form. Okay, if we talk about wavelength, what is a wavelength? A wavelength is a length of one cycle or distance between successive wave crest. Okay, that is one trough plus one crest. How? Let's see the diagram over here. This is the below area, this is crest, and this is trough. Okay, so this whole trough and this one crest. If we going to place, if we turn this trough and place it over here, it is going to make one full cycle. It is going to make one full cycle. This is one wavelength. Okay. All right. Wavelength is represented with the Greek symbol lambda. Next term over here is frequency. Frequency is what? One cycle per second, and the SI unit of that is hertz. Now let's see what are important as per the exam. Okay, as per the exam, what is important? This thing that one trough plus one crest forms one wavelength. Okay. The basic definition of wavelength, and then this part lambda, it is a Greek symbol, that is important. The SI unit of frequency, that's important. The speed, the electromagnetic radiation, it has the speed of light, this is important. Okay. And then how the electromagnetic radiation is aligned. If we see here, let's see here. Let's see, this is the direction of electromagnetic radiation. It is moving like this in this direction. We're just talking, okay? And then it will have two components, electrical component and magnetic component. Okay, so your electrical component will go like this. And the magnetic component, this will go like
तो ये बात होगी कि अब क्वेश्चन एक बार आता है कि which one which among electrical and the magnetic field is forming the have the horizontal component and which has the vertical component. तो जो magnetic field है it will have horizontal component and electric field it will have vertical component in the electromagnetic radiation. ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की रिलेशन पे। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की जो रिलेशन होती है, दिस कैन बी डिड्यूस्ड एज c is equals to lambda mu. The c where c is the speed of light and it is a constant, वही जो वेवलेंथ है, और ये mu is the frequency. Since the c, that is the speed of light, is constant, we can say that lambda is inversely proportional to mu, that is wavelength is inversely proportional to frequency. तो जब जब हम लोग की जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होगी, ये वेवलेंथ इंक्रीज होगी, उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, ये इस तरीके से जाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, we talk about electromagnetic spectrum. As we go to the right, the wavelength is increasing, therefore the frequency is decreasing. But when we are going towards the left, the wavelength is decreasing and the frequency is increasing. ठीक है, okay, from the basic idea we are back to visible spectrum. Visible spectrum, ये the range of visible spectrum is 0.4 to 0.7 micrometer. The red, it is longest wavelength and the smallest frequency. The violet has the shortest wavelength and highest frequency. And only portion, the visible length, visible spectrum, it is the only portion of spectrum associated with the concept of colors. All right, primary color will be your red, blue and green. We talk about infrared radiations. The infrared are ranging from 0.7 to 100 micrometer. The near infrared, also known as NIR, इसकी range होगी 0.7 to 1.3 micrometer. MIR की 1.3 से 3 micrometer. Thermal infrared की 3 to 100 micrometer. If we talk about your microwave region is lying from 1 mm to 1 meter. It covers the longest wavelength which is used for remote sensing. Okay, light as well as electromagnetic radiation, they can both exhibit a wave and a particle theory at the same time. Okay, so according to wave theory, the electromagnetic radiation, it oscillates in the direction transverse to the direction of wave travel, hence also called as transversive. इसके मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इस साइड है, तो जो वेव है इट इज गोइंग टू ट्रांसवर्स, लाइक इट विल गो लाइक दिस, इट वोंट मूव ऐसे सीधे नहीं घूमेगा, ये हमेशा थोड़ा ऐसे ऐसे करते हुए जाएगा. ओके, दिस विल बी द मीनिंग ऑफ द बेसिक आइडिया. और इसी तरीके से जब ये मूवमेंट ऐसे होती है, ठीक है, तो rather than ye straight line, then it is called as transverse wave. Now according to particle theory, the radiant energy is transmitted in n successive packet of energy. छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जीज हो गई और एनर्जी इसी तरीके से मूव कर रही है, rather than एक discrete line में या discrete direction में with the wave it is passing. Okay, this will be your particle theory. Then energy is equals to electromagnetic radiation.
Okay, so till now we have uh, talked about platforms, the basic idea of remote sensing, platforms, the sensors, the type of sensors or the classification of sensors on different bases. And then we have talked about the basic idea of electromagnetic radiation, the relation between wavelength and frequency, what are the important points according to the exam. And then with that, we have come to the end of this discussion till now. Okay, we have covered half portion of electromagnetic radiation, and in the coming videos what we are going to talk about, we are going to talk about energy interaction with atmosphere. That we will be covering the scattering of radiation, then absorption of radiation, and then transmission of radiation. After that, will go on talking about energy interaction with the Earth's surface and its features. It will again cover absorption, transmission, and reflection of the energy. After this, we are let's see some of the questions related to the topic which were already shared on the group. Okay. Okay. So the first question, the very first question is talking about what is the angle between electrical and magnetic field of an EMR. The correct answer will be 90-degree. How? Because we have talked, right? It's a make a clear one. Like like this is the direction of electromagnetic radiation is happening here. This is your electrical field. Electrical field is always vertical component. Then comes magnetic field. Magnetic field will always be your horizontal component. Okay, this will be your magnetic field. Now what is the angle between these two? Angle between these two will be perpendicular. See, this is perpendicular, right? That is, it will be always 90-degree. Okay, so the answer will be 90-degree. Next question. Next question is electromagnetic radiation travels with the speed of. So above we have read that EMR, it travels with the speed of light, and speed of light is what? 3 into 10 to the power 8 meter per second. It is constant, right? इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, the third question is talking about what is the relationship between wavelength and frequency in an electromagnetic radiation. It is an inverse relationship where there we have seen that lambda is inversely proportional to mu. Okay, ठीक है. 78% लोगों ने 9 लोगों ने जवाब दिया. 78% has been answered. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Next question, question number 4 is talking about what is wavelength. So the wavelength will be the length of one wave cycle or one crest or one trough. The answer will be both A and B. हमने ऊपर वाले स्लाइड में देख लिया. ठीक है, आगे है SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है. SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी will be your hertz. Next is which are the primary wavelength of visible spectrum. It is red, blue and green. Seventh question, a microwave region extends from 1 mm to 1 meter.
इसके बाद है इनविजिबल रीजन, द ब्लू लाइट इज हैविंग अ वेवलेंथ रेंज ऑफ 0.42 टू 0.52 माइक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल रिमोट सेंसिंग। The options given are interaction of energy with the atmosphere, next is electromagnetic energy, next interaction of energy with the satellite, and then your electromagnetic spectrum. So out of these, what would be not a principle of remote sensing? Let's see. तो जो energy interaction of energy with atmosphere, this is going to happen क्योंकि अगर energy जो है वो atmosphere से interact नहीं करेगी तो फिर वो सेंसर तक पहुंचेगी कैसे? ठीक है, सो दिस विल बी definitely a principle of remote sensing. Electromagnetic energy will be a remote sensing principle, ये भी जरूरी है. Electromagnetic spectrum, yes. Why? Because in the electromagnetic spectrum we have different regions. Let's say visible spectrum region, then infrared, then microwave, then UV. We are going to study about them all. So next, your third option, that is the interaction of energy with the satellite. This is wrong. Why? Because the satellite, it is a platform. Okay, satellite is a platform or a carrier that is going to carry your sensor. So in case of satellite, if it was written कि satellite के जगह अगर ये option होता कि interaction of energy with the sensor, then ये सही हो जाता, मतलब ये वाला भी could be a principle of remote sensing, लेकिन sensor की जगह satellite है, so this is wrong. ठीक है, next question is talking about if the intensity of wavelength decreases, the energy released will, the answers, it will be the options are given are 0 or it will remain same. 0 or remain same will be same. ठीक है, options given are 0, remain same, decreases or increases. So our answer, it will be increases. Why? The wavelength is, it is decreasing, and energy could be given as your frequency. So if they have the inverse relationship, no, your wavelength and frequency. So if the wavelength is decreasing, the frequency will increase, and hence the energy will increase. So answer will be increase and not decrease or 0 or remain same. Next question is strength of signal doesn't depend upon which of the following factors. The factors given are energy flux, dwell time, altitude, or reflection. So the strength of signal, it will not depend on reflection. Obviously, reflection is happening what? जो भी एनर्जी यहाँ आ रही है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके जब जा रही है तो ये सिग्नल पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना. जो डेटा जनरेट हो रहा है, इट कुड बी ऑफ लो क्वालिटी, या इसमें थोड़ा बहुत जो भी सेंस्ड होता है, जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है उसमें कुछ कुछ हैम्पर हो जाते हैं. वाई वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें इंट्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की गई है देयर. तो लेकिन जो सिग्नल है उस पर कोई असर नहीं पड़ता रिफ्लेक्शन का. बाकी अल्टीट्यूड क्या है? अल्टीट्यूड आपका कितना हाई है उस पर सिग्नल पे असर पड़ेगा. अगर इन द लैबोरेटरी और द सेंसर इज हियर, ओके, एंड हमारे पास जो भी नेटवर्क जो कैप्चरिंग है, एंटीना अरे जो हो गया, एंटीना अरे हमारा ग्राउंड पे है, और अगर ये है कि ये 50 मीटर तक ही की रेंज है इसकी, कि 50 मीटर तक अगर कुछ सेंसिंग का डेटा है वो एक्वायर हो जाएगा तो ठीक है. बट अगर जो हमारा सेंसर है वो 50 मीटर की रेंज से ऊपर चला गया तो जो हमारा सिग्नल है वो हैम्पर करेगा. ठीक है, बिल्कुल करेगा. जो एनर्जी फ्लक्स है उसमें भी अगर काफी एनर्जी अचानक से आ गया, कोई भी फ्लक्स हो गया, तो वो जो सिग्नल है वो हैम्पर करेगा फॉर फ्यू सेकेंड्स और समथिंग. ठीक है, ड्वेल टाइम इस पे भी असर करेगा, वो कितने दिन में या कितनी देर में आ रहा है, कितनी देर में कैप्चर कर पा रहा है, ये भी स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल है. ठीक है, ये भी होगा, बट द रिफ्लेक्शन की इसमें कोई बात नहीं होती है. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है.
अगर नहीं आया तो एक बार आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसके बारे में I'll put the answer and with explanation in either the telegram group or in the next video. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. इट इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे वेरीज फ्रॉम डैश टू डैश. So the answers will be meters to nanometers. Why meters? Your microwave radiation, they are into meters. They have SI unit of meters, while your UV radiation, they have SI unit of nanometers. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है. इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच फील्ड इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली? द आंसर विल बी मैग्नेटिक फील्ड. वी हैव जस्ट सीन इट हियर. ओके, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड दे हैव वर्टिकल कंपोनेंट ऑलवेज एंड द मैग्नेटिक फील्ड इट विल हैव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज. Okay, question number 14 is here. Question number 14 is talking about which of the following has the maximum value in electrical or the magnitude or the magnetic field? The answer will be your amplitude. And then with this question here on, we mark the end of this video, this lecture series. Thank you so much. And thank you so much for the constant support that we are getting on the Telegram channel and the YouTube channel as well. The views are increasing. However, it is very meager, it's very small, but that also gives the ray of hope to us. Thank you so much. And we are going to be quick. The exams are there. ICAR SRF 2025 will be out soon. So all the very best, prepare well. And also we have started our Instagram page. You can get the link in the Telegram channel. Please join, and it is all for the sake of better communication. Thank you so much. See you all. Bye bye. All the best.